नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुके त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। आई प्रैक्टिस लॉ बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट इन सेशन कोर्ट्स अक्रॉस नेशनल कैपिटल रीजन एंड वेरियस ट्राइब्यूनल्स एज वेल। दोस्तों, आज का जो वीडियो ब्लॉग है इसमें हम बात करेंगे प्रिजम्पशन ऑफ डॉवरी डेथ के बारे में, और इसके लिए हम पढ़ेंगे रेलेवेंट जो इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है, एंड वील आल्सो ट्राई एंड चिट चैट लिटिल अराउंड द डॉवरी डेथ। अगर आप लोग यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं और पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से ऐसे वीडियो ब्लॉग्स आपके पास पहुंचेंगे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर भी करिए, और साथ ही साथ जो है मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिएगा। आइए समझें प्रिजम्पशन ऑफ डॉवरी डेथ। दोस्तों, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जो सेक्शन 113B यानी कि 113B जो है वो जो है प्रिजम्पशन एज टू डॉवरी डेथ के बारे में बात करता है। इसमें माना यह जाता है कि अगर किसी शादीशुदा महिला की डेथ से पहले इफ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी, यानी कि उसको जो है दहेज की मांग से रिलेटेड उसका उत्पीड़न अगर हो रहा था, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो उसकी जो डेथ हुई है उसमें जो है उस दहेज की मांग का भी हाथ है। अब इस सेक्शन के लिए डॉवरी डेथ का मतलब वही है जो इंडियन पीनल कोड की दफा 304B के तहत है। एक मुकदमा आया था दोस्तों, ये था पब्लिक प्रोसिक्यूटर AP हाई कोर्ट वर्सेस टोटा बसावा पुनिया 1989, क्रिमिनल LJ 2330 आंध्र प्रदेश। ये मुकदमा ये था कि ये जो सेक्शन 113B जो कि डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट 186 के अमेंडमेंट के तहत इसको जो है ऐड किया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को किस हिसाब से हम समझें, तो इस मुकदमे के माध्यम से ये बताया गया और ये साबित हुआ कि अगर महिला की डेथ शादी के 7 सालों के अंदर अगर हो रही है, और अगर वो जो है अगर इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि उसकी डेथ से पहले जो है उसको शी वाज सब्जेक्टेड टू डॉवरी रिलेटेड डिमांड्स एंड क्रूरल्टी एंड हैरेसमेंट, तो भी यही समझा जाएगा कि ये जो डेथ है ये जो है डॉवरी डेथ है और उसी श्रेणी में ही आएगी। अब अगर आप देखें कि ये डॉवरी डेथ से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आए हिंदुस्तान भर में, और एक आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो केसेस हैं इसके पीछे कोई भी टेक्निकलिटी हो सकती है। आई विल नॉट गेट इनटू when the marriage is not working or when person is committing suicide or situation like that. It has a lot to do with the mental health, family situation, what's apparently happening in the immediate family, person's personal dilemma, and very many other things. But since we are talking about here what Indian Evidence Act says, so understand that in dowry death cases, the presumption of the burden of proof is on accused person to prove that he has not subjected that married lady to commit suicide. So therefore you will have to prove this before the court of trial. You will have to satisfy the investigating officer regarding that, and it has been seen time and again on numerous situations that when unforeseen situation like this happens in a family, so predominantly both sides they fall apart, they are away from each other, they do not discuss things with each other, they are not thinking logically, they think emotionally, and the cases are end up being filed despite the fact it may not be a situation of a dowry death, maybe a situation related to some or the other issue. But presumption of this section is that if the female dies within the 7 years of marriage,
it is out to be considered as a dowry death. Okay, now understand that this section is not retrospective. So this was what used to happen as if when this section was added in 1986, it has got nothing to do with it. It is post 1986 when the amendment happened. So ever since then, constitutional validity of this section was also challenged, in Christian Lal versus Union of India 1994, and it was held that the presumptions are not ultra vires under the Article 14 as well as 23, 21 of Constitution of India, that the presumption can be formed. There is nothing wrong with that. And if you do understand presumption when attracted, presumption under section 113 will operate if prosecution is able to establish circumstances set out in the section 304B Indian Penal Code. ये एक और मुकदमा स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस MV मजुगंद्रा 2003 to SCC 188, एक और मुकदमा था जिसमें कहा गया था. See, I myself have done trial related to dowry death cases, and let me tell you this, the law which basically work, or the rule which basically work, is that people may lie, circumstances do not. I am telling you this, if somebody is trying to produce fabricated evidence against you, it will not stand in the court of law. You have all the right to shake prosecution's evidence if the case has just been written based on some sort of a pressure on the investigating officer. So understand that presumption of innocence will prevail when court has to choose between presumption as to dowry death versus presumption of innocence. So in cases like these, those are related to dowry death also, people say, hey, when presumption of innocence is there in our country, how come the presumption of dowry death is there against us? So come on, the validity of this section has already been challenged before the honorable Apex Court. Apex Court decided it's not ultra vires. भाई संविधान के खिलाफ नहीं है ये सेक्शन. तो जब संविधान के खिलाफ नहीं है तो दो प्रिंसिपल्स हैं जिनको चूज करना है ट्रायल कोर्ट को. एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, दूसरा प्रिजम्पशन ऑफ डॉवरी डेथ. तो ये जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है ये ज्यादा प्रिवेल करता है अपॉन प्रिजम्पशन ऑफ डॉवरी डेथ. भाई आपने प्रिज्यूम किया कि 7 साल के अंदर अगर डेथ हो गई है मैरिड लेडी की, तो वो उसके हस्बैंड या उसके घर वालों ने की होगी. सिमिलरली अगर आप बात कर रहे हैं प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस की, तो आप इनोसेंट हैं टिल द टाइम द कॉम्पिटेंट कोर्ट प्रूव्स यू आर गिल्टी, टिल द टाइम द कोर्ट डिसाइड्स दैट यू कमिटेड दिस वेरी ऑफेंस. सो दैट presumption which says that you are an innocent person till the time the competent court punishes you, you're an innocent person. That rule basically prevails over the presumption of dowry death here. However, like I said at the beginning, you may say that you've not done anything. Normally accused persons do not say they've committed an offense or they've not committed an offense. Even if they say you got all the right to keep it to yourself, the competent court will shake the right evidence during the course of a trial. The right evidence will come out. Your portion of truth, and in when it's a matrimonial case wherein some offense like 304B that you are fighting, I understand it's a difficult and very condescending process. It is very exhaustive process, but you'll have to continue believing on presumption of innocence because that rule prevails every other presumption. So yeah, this is a little blog that I have created on section 304B as well as section 113B Indian Evidence Act 1872. दोस्तों पूरे पूरे वीडियो ब्लॉग के दौरान मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर थी. आई होप यू फॉलोड मी ऑन दैट, एंड इफ यू हैव एनी questions or doubts, you can always type into me in the comment box. I'll get back to you.
I may not be able to answer each and every question, but if you are persistent, if you're persistent about asking that question, my details are there. You can get in touch with me, because in order to answer one legal query, which is during the course of a trial, a lawyer has to review many things. I'll have to review all the documents. So if you are persistent about asking your question, and that I answer all the phone calls, that I try and answer whatever queries I can do on WhatsApp, as well as on whatever comments I receive on social media. If I do not, like I said, be persistent, where to catch me. दोस्तों, इस वीडियो ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.